Breast cancer diagnosis and treatment can change a lot in our life, including our sex life. Physical changes to our body, side effects from the long and difficult treatment, and how we feel about our body and sex can often make intimacy very challenging. Unfortunately, we do not address this issue. हम चुप रहते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, और अगर बात करना चाहें तो हमें समझ नहीं आता कि किससे बात करें. We have with us today Dr. Tripti Sharan, an eminent gynecologist and author of several women-centric books. She will address all our issues on this sensitive topic. Welcome to Happiness After Cancer, Dr. Tripti. Thank you for agreeing to talk on this sensitive but very important and relevant topic. Thank you so much, Nidhi. Thank you for inviting me. It is a topic that I feel very passionately about. And I would say I really admire the courage of all of you, not only because you have chosen this topic, but you have, fought the demon of a disease. So let's take this forward, Nidhi. Yeah, sure. So can I share screen? Yes, you can. Just check, is it showing you? I think it shows. No, you have disabled, you'll have to okay, enable me. Okay, yeah, now I've enabled you. Have a look. I've enabled you now. Yes. Yeah. So friends, today we are going to talk about sexual dysfunctions in women. And trust me, I've not written sexual dysfunctions in survivors of breast cancer disease, because I believe sexual dysfunction to an extent is present in all of us. The situation may be a little different for one woman, but let's understand it as a whole, right? What is sexual dysfunction? These are the difficulties which any individual, or let's say a couple, would have during any stage of a normal sexual activity. This can include the physical pleasure, this can include the desire, this can include the preference one has. It also includes arousal or orgasmic disorders, and of course it has an impact on how an individual perceives its effect on his or her quality of life. Now, most of the dysfunctions are age-related, they are progressive, and they're highly prevalent. They are present in about 30 to 50% of women. So where it is only in 30% in men, it is here in 43% of women. And most of the times it is in the postmenopausal women. The persistent problem which most women have is a lubrication problem. As you grow older, more than 60 years, 62 to 85% have sexual dysfunction. If you talk to women, about women, 1 of 3 women who reported lack of interest, 1 of 3 reports lack of sexual interest, 25% do not experience orgasm, 20% have lubrication difficulties, and 20% do not find sex pleasurable. Now, the most common complaints, yes, you would relate to this, is one is lack of desire, negative thoughts and feelings during sex, difficulty reaching the climax or orgasm, vaginal dryness and tightening, or what we say pain during sex or when the genital area is touched. Now let's not go to it. So we can have either a desire disorder, or we can have an arousal disorder, we can have an orgasmic disorder, or we can have a pain disorder. Now all these things, sometimes they are not present in isolation. They might overlap, or one can give rise to the other. But the treatments and etiologies can sometimes be different. Now, these problems may be lifelong, or you might have acquired it later on in life. It may be due to a certain situation, or it would be all the time. It can be mild, moderate, or severe. Now, I don't think I need to tell you in details what is a desire disorder. Whenever there is an absence or recurrent deficiency of sexual fantasies or thoughts, or desire for or receptivity to sexual activity. And trust me, these are disorders only when they are causing a personal distress. There are women who have never had arousal. There are women who have never had an orgasm, but they do not have distress. They accept it and they're happy women. So that means that they do not consider it as dysfunction. There is nothing wrong about it.
All right, they are different. But if I cannot say you have to have this problem for 6 months, then only to, have a distress, because every individual is different. So it has to cause distress, whether it is a desire disorder, or it is an aversion disorder, or it is an arousal disorder. In arousal disorder, normally there is a problem in, concentrating on any activity which is around on, let's say, sexual excitement. And this prevents a woman from getting aroused, and this causes a lot of personal distress. Again, this is about 35% of women have never had an orgasm, either with a partner or during masturbation. And this is which is called orgasmic disorder. Pain disorders are, again, we call it a dyspareunia in our terms. There is something called vaginismus. Dyspareunia means whenever a painful intercourse is called dyspareunia. Vaginismus is women. I have seen plenty of these women who cannot even lie on the table, right? They will never open their legs. They've never had sex in their lives. Why? Because they have vaginismus, has a fear component, it has a pain component, and it has a spasm component. So now there are women who've always had vaginismus. They've never been into a sexual activity, but then there are women who will develop it later in life. These are the women who would have sometimes surgeries on their vagina. They are sometimes cancer survivors who had extensive surgeries lower down, and they have a lot of pain, and they start having an aversion, or because of repeated pains, they don't allow. Now, let's understand what are the sexually sensitive areas. I'm sure most of us know that it is clitoris, nipples, breast, labia, the skin, the lower 1/3 of vagina. The upper part of vagina is response to the pressure symptoms. There's something we still don't know whether it exists or not, is a G-spot. Then lubrication is a very important component for having a good sex. That is, it is secreted from the vaginal and the cervical mucus, and there are the glands also in that area. Now the hormones, again coming to estrogen, the culprit in most of the most women. But let me tell you, estrogen has got nothing to do with libido. It is not declining estrogen which will cause lack of desire. Even older women have desire. It is other problems that estrogen causes. Estrogen will, cause maybe breast atrophy. It will decrease your, the skin vitality, your hair, the self-esteem, the self-image we carry. Women would start having, joint pain, muscle aches, and all these things might maybe make her feel not very good, have a lower self-esteem, not feel well all the time. And then estrogen very notoriously decreases the lubrication. So when the vagina becomes dry, there is less arousal, there is less sensitivity, there is more pain. So that is a major thing that estrogen causes. Now, the other hormone, testosterone, it is testosterone that causes libido, arousal, it causes sexual energy, it gives a sense of well-being, it increases your muscle strength, bone strength, it gives you a lot of hair, except hair here, everywhere else. So you have to see that generally it is a lack of testosterone as we grow old. Though the major hormone after menopause, the ratio reverses. Earlier it is more estrogen, less testosterone. As we grow older, the ratio reverses. We have more testosterone, less estrogen. And both of them are now less. I hope I'm clear. That is why you have started shrinking in muscle, shrinking in bones. It is not because of only estrogen, but majorly because of testosterone. Your vitality, your muscular strength, not only in men, in women also it comes from testosterone. The third one is DHEAs. Unfortunately, testosterone, DHEAs, they are both not available for therapeutic use. I'll come to it later on. Now, again, this is what I've already told you, that estrogen alone will not improve desire and other sexual problems. And you need other things for this. And generally, one needs a combination of estrogen and androgen. But here again, just hold it. Dr. Tripti, sorry to interrupt you. Can we Yes. go a little simpler
We have comments coming in, और थोड़ा सा हिंदी and little more simpler language. हिंदी बोलो, मैं आपने तो कहा इंग्लिश बोलो. नहीं मैंने कहा इंग्लिश. अच्छा हाँ ठीक है. हिंदी. So, हाँ मेरा ये कहना था कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जिसको हम बहुत बोलते, हमें लगता है कि दिस इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, तो इट इज बोल्ड ईस्ट्रोजन एंड द अदर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. बाकी ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इसको जानने की हमें जरूरत नहीं है. कभी भी सेक्सुअल रिस्पॉन्स होता है, इसका एक मेजर कंपोनेंट होता है साइकोलॉजिकल, सेकेंड होता है इंटरपर्सनल, थर्ड होता है कल्चरल, फोर्थ होता है एनवायरमेंट और फिफ्थ होता है बायोलॉजिकल. आई होप आई एम क्लियर हियर. बिकॉज यही हमारे को ट्रीटमेंट भी बताते हैं कि हाउ वी हैव टू गो अबाउट. जो हमारा बायोलॉजिकल पार्ट है वो अगेन हार्मोन से हो सकता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है उससे होता है. सेक्स के लिए यू नीड अ गुड मसल टोन एंड यू नीड अ गुड नर्वस सिस्टम, नर्व्स भी चाहिए. तो ये सेंसेशन होना चाहिए, मस्कुलर पावर होना चाहिए, ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ताकि उस जगह एनगॉर्जमेंट हो थोड़ी, और हार्मोन्स होने चाहिए. इन सबको मिलाने से ही you will have a good sexual experience. Now reasons we all know what it is. Aging, medicine, medical problems होती हैं, हमारी personality disorders होती हैं, हमारे psychological issues होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, and hormones होते हैं, especially जब post menopause या uterus surgery हो गई हो, ovarian surgery हो गई हो, और सबसे बड़ी important होता है sexual dysfunction of the partner. Most women suffer because there is a sexual dysfunction of the partner, जो कि उसकी अलग reasons हो सकती हैं. Then gynecological interventions जैसे uterus surgeries हो गई हो, और या फिर cancers, या तो diseases की वजह से है, या उसकी surgery की वजह से है, या chemotherapy की वजह से है, या radiotherapy. All these will affect all components of sexual response. ये छोड़. मेडिकल कॉलेजेस में सारी जो हमारी मेडिकल इलनेस होते हैं, अगर किसी के साथ में है तो दे कैन कंट्रीब्यूट. अ कैंसर पेशेंट माइट हैव डायबिटीज, माइट हैव थायराइड, माइट हैव हाइपरटेंशन, लिपिड्स गड़बड़ हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं. ज्यादा वेट है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, डायबिटीज के साथ नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है, और नर्व्स ठीक नहीं होंगी तो जो बॉडी के ड्यूरिंग सेक्स एनगॉर्जमेंट होती है, इरेक्शंस होती है, इवन फीमेल्स में होती हैं, तो वो भी प्रॉब्लम होती है. ये छोड़ दीजिए. नाउ कमिंग टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किसी का पास्ट एक्सपीरियंस कभी कभी कोई नेगेटिव हो है, या किसी को कोई भी इमोशनल फिजिकल अब्यूज हुआ है, या कोई ट्रॉमेटिक लॉस हो गया, दीज पीपल आर वेरी वेरी प्रोन टू शाई अवे फ्रॉम सेक्स. देन अगर कंसर्न्स अबाउट नेगेटिव आउटकम है, सेकेंड अगर लो सेल्फ एस्टीम है, देर इज सम शेम फीलिंग, देर इज सम गिल्ट फीलिंग, दीज इम्पैक्ट क्वाइट अ लॉट. तो ये हमारा जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स दिस, और इसमें ऐसा नहीं है कि वो जो भी द वुमन हु सेइंग इट इज हर प्रॉब्लम, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स. मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, लोगों को डिप्रेशंस होने लग जाती है, एंजाइटी है, फियर डिसऑर्डर्स, स्पेशली व्हेन वी आर फेसिंग अ डिजीज लाइक कैंसर. At every part these are there and they can impact your sexual wellness. These are again something that we have already talked about, but कभी भी जब भी आप कोई एक डिजीज को फाइट कर रहे होते हो तो आपका रिलेशनशिप भी उस समय बहुत कुछ चेंज होता है. Sometimes you have you don't trust yourself, you feel that this is now not really needed. अब लाइफ के challenges different हैं, there is a negative feeling, you might feel कि हमारा now we are not as attractive as we were earlier, या हमारे पार्टनर का behavior change हो गया है. तो ये सारी चीजें होती हैं when we are undergoing lot of stress, and it is a very important. सेकेंडली, कई बार जब हमारे साथ में कोई डिजीज या प्रॉब्लम होती है तो हमारी सराउंड बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, वी आर नो लॉन्गर द यूनिट दैट वी वर. तो बहुत सारे और कॉन्टेक्ट और होता है ना कि अब हमारा हॉस्पिटल विजिट्स है, अब हमारा कीमोथेरेपी का साइकिल है, तो और चीजें आती हैं, और जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो चेंज हो जाता है लाइफ का. So we now have a different surrounding that we are living in, and that can also impact on the cancer survivors and their sexual wellness. Distractions, cultural context, these are always present in all women.
मेडिसिन पे हम जहां तक आते हैं, जो ये सारी मेडिसिन है, मैंने पहले एक लिस्ट लिखी थी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, स्पेशली जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी जो झेल रहे होते हैं, उनको कई बार डॉक्टर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एंटी डिप्रेसेंट, बट इज वेरी कॉमनली गिवन। आप एक एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हो ताकि उसको लो फीलिंग ना हो। तो इनमें से बहुत सारी दवाइयां हैं विच इनडायरेक्टली कॉज अ लो लिबिडो, ठीक है। सेकंड, बाकी एंटी, किसी को ब्लड प्रेशर है तो बहुत सारे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है विच कॉज लैक ऑफ डिजायर। बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं मेडिसिन के, उसमें जो मैंने रेड लिखा है, दीज आर द मेडिसिन जो कैंसर सर्वाइवर्स, स्पेशली जो हार्मोन पॉजिटिव होते हैं, उनको दिए जाते हैं। टेमोक्सिफेन, जीएनआरएच या लेट्रोजोल ग्रुप की ड्रग्स होती हैं। ये सारी आपकी ओवरीज को इम्पैक्ट करती हैं एंड दे फर्दर रिड्यूस योर desire and all these feelings. Chemotherapy again causes the same thing. So normally we need to speak to the patient alone plus together. Alone भी जरूरी है और together भी जरूरी है, and one must go into every aspect of the relationship, try to find out about कोई medical history है, कोई drug history है, कोई abuse history है, ये सब चीजें देखनी चाहिए. And one needs to ask very thorough questions. ये questions आप लोगों के लिए भी बहुत important हैं. You can read it, so you will understand to an extent that कि हम किस level पे हमारा गड़बड़ हो रहा है. I think this all we have talked about. Yeah. Investigations, ideally speaking, for sexual dysfunction जरूरी नहीं होती हैं unless until किसी को diabetes या थायराइड या ये सब प्रॉब्लम हो, तो उस केस में ये देखना जरूरी होता है. एक बेसिक टेस्ट तो होते ही हैं सबके. सो कमिंग टू द सेक्सुअल थेरेपीज होती हैं, उसमें सबसे पहले वन हैज टू लुक एट वट एवर द डिजीज आपका, एक रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड हमेशा इवेलुएट करना चाहिए. एंड दिस इज वेयर समटाइम्स वी सेंड यू टू द साइकेट्रिस्ट, बिकॉज ये जो सेक्स थेरेपीज होती हैं, कपल थेरेपीज होती हैं, स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपीज होती हैं, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, दे ऑल इम्पैक्ट हियर, बिकॉज हम सभी एक बहुत डिफिकल्ट टाइम पे जा रहे होते हैं. तो इन सब चीजों के लिए दे गिव यू वेरी गुड थेरेपीज एंड वन मस्ट टेक देम. चाहे हमारे को फियर हो, एंजाइटी हो, गिल्ट हो, शेमिंग फीलिंग हो, लो सेल्फ एस्टीम हो, लो बॉडी इमेज हो, तो these things help us. इनको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज कहते हैं या फिर हम माइंडफुलनेस कहते हैं, जिसमें हम कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, बिहेवियरल चेंजेस सिखाते हैं, जो इनएक्यूरेट थॉट्स आ रहे हैं उनको हटाते हैं. एंड समटाइम्स वी आल्सो वांट द पार्टनर टू बी इंक्लूडेड सो दैट टुगेदर यू कैन मेक इट मच बेटर if the partner is willing or if the woman is all right including the partner. Again, with the disease, with surgeries, with pain, it is always best to find a comfortable position for intercourse, because that is the first thing that will avoid lot of pain. Third, learn to relax the muscle of your around the introitus. That is, क्या होता है कि हम एक कीगल एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं. उसमें क्या है कि अगर आपकी कोई भी चाहे बीमारी हो, चाहे ड्रग, just 1 minute, there's a phone from labor Nidha. If you allow me, I'll just tell her, otherwise she'll keep calling. Hello? हाँ नीलम मैं उसमें हो वेबिनार में, मैं 2 मिनट में कॉल कर लूँ after 10-15 minutes if it is not urgent. Ma'am, one patient is coming. Okay. Okay. So one needs to find a comfortable position. Second, we need to do Kegels. We need to do Kegel exercises. उससे क्या होता है कि right balance होना चाहिए आपका muscle का tension in the down below plus relaxation. अगर बहुत stress में रहेंगे, बहुत tension करेंगे तो भी sex becomes painful. So you need to relax the muscles there, not only relax in the mind but also there. And how do you relax there? एक और हम लोग कहते हैं कि आप Kegel कीजिए. Kegel exercises, I hope you people have heard about it.
कीगल एक्सरसाइजेस आर पेल्विक, जैसे हम बाकी मसल की एक्सरसाइजेस करते हैं, वो कीगल नीचे की मसल्स की एक्सरसाइज होती है, योर पेल्विक मसल्स और पेरिनियल मसल्स जो हमारी लैंग्वेज में होती है. वी टेल यू कि जब आप वॉशरूम जाते हैं, इफ यू हैव अ वेस्टर्न कमोड, यू सिट ओवर इट, यू पास यूरिन, आफ्टर दैट यू शुड ट्राई टू एज इफ यू आर स्टॉपिंग यूरिन. तो वो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वाले मसल्स को हमें टोन अप करना होता है. हम जितना वो एक्सरसाइज करेंगे, हमारे वजाइना की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, राइट. मसल टोन अप होंगे एंड इट इज वेरी गुड फॉर दैट एरिया. जितना ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, वहां की जो म्यूकोजा है वो श्रिंक होके थिन नहीं होगी. So Kegel exercise is a very important component of exercise for all women, not only cancer survivors, but for all women. मेडिकल थेरेपीज का अपना रोल होता है. सिल्डेनाफिल जो कि हम वियाग्रा कहते हैं, उनको कई बार इट इज नॉट FDA अप्रूव्ड नहीं है लो डिजायर के लिए, बट मेनी अ टाइम्स अंडर द टेबल प्रिस्क्राइब बहुत सारे साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो करते हैं. दो वी डोंट रिकमेंड इट फॉर कैंसर सर्वाइवर्स, बट इट कैन इम्प्रूव ब्लड सप्लाई जो होता है पेल्विक ऑर्गन्स का, वहां का ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है. सो इट इम्प्रूव्स लुब्रिकेशन, सेंसेशन एंड एनगॉर्जमेंट. सो ये सब चीजें करेक्ट होती हैं तो अपने आप ही डिजायर भी इंप्रूव होता है. एंड एंटी डिप्रेसेंट्स के वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको भी ये काउंटर करता है. सो इट इज अदरवाइज अ वेरी गुड ड्रग फॉर मेल्स बट ऑल्सो फॉर फीमेल्स. जहां तक हमारे वजाइनल ड्राइनेस की बात होती है, उसमें एज आई टोल्ड यू कि हार्मोनल थेरेपीज हम लोग यूज करते हैं. हम ईस्ट्रोजन्स यूज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और DHA करते हैं. फॉर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हु आर नॉट लाइक हु हैव बीन HRP ERPR पॉजिटिव, उनमें one has to be very careful with these drugs. They are not indicated because they might increase the estrogen levels, which is not good अगर आपका हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर था. अदरवाइज अगर हार्मोन पॉजिटिव नहीं है तो उसमें वजाइनल ईस्ट्रोजेंस आर वेरी गुड. वजाइनल ईस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो आपके वजाइनल म्यूकोजा को हील कर देते हैं, जो इधर बिकॉज ऑफ डिजीज या बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी अगर हार्मोन्स कम हो गए हैं तो वो उसकी श्रिंकिंग को प्रिवेंट करते हैं और फिर से रीजेनरेट करते हैं. और वजाइनल ईस्ट्रोजन दे आर अदरवाइज वेरी सेफ, बहुत कम ब्लड में एब्जॉर्ब होता है. तो अगर कोई पेशेंट बहुत डिस्ट्रेस्ड है, सो दे शुड टॉक टू देयर जो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट हैं कि हम क्या वजाइनल ईस्ट्रोजन यूज कर सकते हैं. आउट ऑफ ऑल दे आर द वंस विच आर अ लिटिल सेफ, इफ यू गेट माई पॉइंट. क्योंकि उसमें आपका अगर जो टेमोक्सिफेन वाले हैं उनमें तो कहते हैं आप फिर भी दे सकते हो, जो दूसरा लेट्रोजोल ग्रुप होता है उनमें मना करते हैं, और वो तभी देना होता है अगर सीवियर डिसफंक्शन है या सेक्सुअल डिसफंक्शन है, एंड इफ द वुमेन इज वेरी वेरी परेशान फ्रॉम इट, अगर उसको उससे बहुत परेशानी है. टेस्टोस्टेरोन के साथ प्रॉब्लम क्या है, वर्ल्ड ओवर यूज होता है, इंडिया में नहीं अभी हो रहा है, क्योंकि एक तो जो भी उसकी ओरल डोजेज हैं वो फीमेल्स की डोज के बहुत ज्यादा है, वो मेल्स के हिसाब से बनी है. सो हमारे पास टैबलेट्स नहीं है. जो जेल क्रीम्स हैं वो यूज हो सकती है लिबिडोज के लिए, बट जनरली पीपल अगेन फॉर ब्रेस्ट कैंसर वी डू नॉट यूज इट. DHA इंडिया में अवेलेबल नहीं, इट्स अ वेरी गुड ड्रग, किसी को बाहर से मिलता है, मंगवा सकते हो, प्रेस्ट्रॉन नाम से है. कभी कभी DHA कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन में, बहुत हाई लेवल्स में नहीं है, मिनिमल होता है. आउट ऑफ ऑल थ्री दिस इज द सेफेस्ट. अदर बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसमें once again most of them are not available in India, so no point going through it. जो OTC प्रोडक्ट्स होते हैं, ओवर द काउंटर जो मिलते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स हैं, वजाइनल मॉइस्चराइजर्स हैं, they are all present in India and one should use them as a first line in breast cancer survivors. एंड इनका इफेक्ट अच्छा होता है, स्पेशली लुब्रिकेंट्स का और वजाइनल मॉइस्चराइजर्स का. नाउ देयर आर जिन लोगों को अराउजल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए देयर आर क्लिटोरल पंप्स, देयर आर अराउजल ऑयल्स, देयर आर हर्ब्स एंड देयर आर लोशंस फॉर देम. अभी आई विल नॉट. पेन डिसऑर्डर, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि पेन
क्यों होता है वजाइनिस्मस वगैरह, आई डोंट थिंक वी नीड टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन। जहां तक वजाइनिस्मस की मैंने बात करी थी कि पेन अगर होता है बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ वजाइना, जो कि विद एज या विद डिक्लाइनिंग हार्मोन्स हो जाता है, उसमें दो चीजें यूज करनी चाहिए कैंसर पेशेंट्स को। वन इज अ लुब्रिकेंट, सेकेंड मॉइस्चराइजर्स और लुब्रिकेंट, एंड थर्ड अगर ईस्ट्रोजन क्रीम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये दिस इज द ईस्ट्रोजन क्रीम्स अगर यूज करना है तो। अदरवाइज वी हैव अदर वेज ऑफ ट्रीटिंग देम। देयर आर वजाइनल डायलेटर्स आते हैं जो आप अमेजन पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। सो वजाइनल डायलेटर्स आर अ वेरी गुड वे ऑफ डायलेटिंग योर वजाइना। दे हैव सेट्स, वो आप जाके अपनी privacy में you can start with the smallest size, go on dilating. Trust me, there are women who are born with absent vagina and they have good sex. So even with absent vaginas में dilator से उस जगह बहुत लूज टिश्यू होता है, तो जिनको ऑलरेडी वजाइना है फॉर सम रीजन अगर वो श्रिंक हो रही है तो उसमें यूज अ डायलेटर, और उसके ग्रेजुअली उसके साइजेस बढ़ते हैं विथ लॉट ऑफ लुब्रिकेंट, यूज इट and you will feel confident. Use it, keep it for some time, then again take another one, the larger size. All right, so that will give you more confidence, और वो जो एक fear of pain होता है वो थोड़ा कम होता है। Dr. Tripti, can I interrupt you? I'm sorry, can I interrupt you? There are plenty of people, I think, जो कह रहे हैं कि हम questions हम डॉक्टर तृप्ति से पूछ रहे हैं तो शायद वो better can be. पूछिए, yeah, sure, why not, why not? Okay, so we'll start the first question. जो okay, पहले इसको के आप sharing एक बार बंद कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ ल्यूब्रिकेंट्स के आप नाम बता सकते हो? ल्यूबिक ऑइंटमेंट बहुत अच्छा होता है, ल्यूबिक जेल। अगर वो नहीं मिलता तो सिंपल ज़ाइलोकेन जेली इज अ गुड लुब्रिकेंट, केवाई जेली इज अ गुड लुब्रिकेंट। ल्यूबिक कई बार नहीं मिलता है। एक और वजाइनल मॉइस्चराइजर होता है, उसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, वेट में हर बार थोड़ा भूलती हूँ, आई जस्ट टेल यू, इट इज विजिलिस नाम से आता है, आई होप सो यही है। जस्ट होल्ड ऑन। विजिलिस के नाम से एक वजाइनल मॉइस्चराइजर आता है, that is also a good this. Any oil, any cream which you can use not inside, around is also a good one. Okay, next question is that what could be the reason for vaginal itching and burning sensation prior to physical intimacy? See, most common reason is infection. Okay, One, क्या होता है कि for whatever reason, कभी from because vagina is very close to urine वाला रास्ता and also to the anus. So sometimes it's our hygiene, sometimes it's the water that we use, sometimes we are touching here and there, from mouth the infection goes down, from पीछे the infection can come up. So these are important. Plus sometimes जब आपके हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं तो जो नीचे की ड्राइनेस होती है ना, तो उससे वहाँ की म्यूकोजा जगह जगह फट जाती है, जैसे स्किन यहाँ की फटती है, स्किन जैसे आपके हाथों की, फेस की फटती है, वजाइना की भी स्किन फटने लगती है, एंड दैट एक्सपोजेस इट टू इन्फेक्शंस, और उस एरिया में जनरली फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। okay. Shimona is asking, what about cancer patients who are ER/PR positive, because medication would further reduce their libido? This is a major problem because ज़्यादातर Yes. See, as I said कि जो mainly lower libido अगर है, hello, please can you mute your please mute yourself. You can mute others and I'll mute everyone, and I can I'll do mute that. myself. I'll do that. Yeah. So Dr. Tripti, you need to unmute yourself first. see, as I was talking earlier, estrogen hormone is not responsible for libido. क्योंकि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट होता है, राइट, एक तो डिजीज है, जैसे किसी की ब्रेस्ट की सर्जरी, ब्रेस्ट इज अ सेक्सुअली एरोटिक एरिया, राइट, सो वन हैज, कई बार क्या होता है आपके अंदर थोड़ी सी गिल्ट होती है, यू डोंट वांट टू टच इट, यू डोंट वांट योर हस्बैंड टू टच इट, यू डोंट इवन वांट टू टच द नॉर्मल जो
जो हेल्दी ब्रेस्ट होता है, बिकॉज इज अ फियर कि इसमें भी कुछ हो जाएगा, और यू स्टार्ट फीलिंग द एब्सेंस ऑफ द वन दैट हैज गॉन। आई हर्ड फ्रॉम पेशेंट कि उनको बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, बुरा लगता है, खराब लगता है। सी, दीज थिंग्स टेक टाइम टू गो, इट विल नॉट गो अवे सडनली, इट विल टेक टाइम, and I would say you need to build up this encouragement, this support must come from the partner. That is why we always tell you to go for CBTs, or this इसको कहते हैं ना, जो behavioral therapies होती हैं उसमें जाना चाहिए for counseling session. That would help removing all these, ये जो एक क्या कहेंगे, जो ये थॉट बार बार दिमाग में आती है कि दिस कैन नॉट गो, सो दैट has to go from repeated counseling sessions, and one must take them. And the second part is chemotherapy or the disease induced lower estrogens. तो अब estrogens को हम यूज तो कर नहीं पा रहे हैं उसमें, vaginal estrogens मैंने कहा they are the safest. अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है then you need to discuss with your doctor कि उन्होंने कौन सी सर्जरी करी है, has the excision been complete, राइट, कि उसमें कितना रेसिडुअल डिजीज है, रेमिशन फेज में है कि नहीं उसका। तो कुछ केसेस में वजाइनल ईस्ट्रोजेंस यूज होते हैं, दो पीपल अवॉइड इट, बट व्हेन यू यूज इट यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब होके जाएगा। वजाइनल ईस्ट्रोजेंस जनरली बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, and they can be used, but they are second line. First line is always lubricants, moisturizers. Okay, and another question जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, जो पेन ड्यूरिंग सेक्स, वो आपने शायद पहले एड्रेस भी किया था, दैट एक तो लाइक एक्सरसाइजेस है, कीगल एक्सरसाइजेस, कंफर्टेबल पोजीशन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, यूज लॉट ऑफ लुब्रिकेंट, जितनी लुब्रिकेंट यूज करेंगे उतना पेन कम होगा। एंड अगर वजाइनल शॉर्टनिंग हो गई है तो एज आई सेड प्लीज यूज बाय द सेट ऑफ वजाइनल डायलेटर्स, इट इज देयर ऑन अमेजन, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग साइजेस, द मोर यू यूज इट उससे पेन कम होगा। एंड आई रियली डोंट थिंक कि सारे जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में आजकल सब में हिस्टेक्टमी वगैरह तो करते नहीं है, नहीं है ना, no. तो दैट और रेडिएशन भी जो होता है वो ब्रेस्ट को होता है, वो नीचे वजाइना में तो होता नहीं है ना, तो दैट उस एरिया का इतनी जल्दी शॉर्टनिंग नहीं होती। इफ यू कीप डूइंग यू नो डायलेटर, if you keep doing Kegel exercises, and let me tell you, even masturbation to an extent, because it stimulates those muscles, it improves the blood supply to vagina, and as I said कि blood supply बढ़ती है मसल उस एरिया की, तो म्यूकोजा को भी, जो वजाइना की लाइनिंग होती है हम उसको म्यूकोजा कहते हैं, वहां भी जाएगी तो वो हेल्दी रहेगी। रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी विल ऑलवेज कीप द वजाइना ओपन। तो थोड़ा सा you know you have to concentrate once again on this, go on all aspects, not only one, go on everything together. ओके, एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि हम कह रहे हैं कि टेमोक्सिफिन या ERPR पॉजिटिव हो तो ही है, बट बहुत सारे सर्वाइवर्स डॉक्टर तृप्ति ऐसे हैं जो TTN-BC हैं, जिन्होंने टेमोक्सिफिन नहीं ली है। डू यू थिंक कि अर्ली मेनोपॉज सेट इन हो गया है? ठीक है, so that could be one of the reasons for a low sexual drive. Yes, no, low sexual drive, as I said, is not because of hormones, which is again and again which I want to tell you. That is why अगर हम estrogen देंगे भी आपको, एक normal जो without cancer patient को भी estrogen नहीं दिया जाता है for improving libido. It is not a drug for libido, right? It acts only by removing the pain component. It acts only by increasing lubrication. Lubrication improve होता है, pain improve होता है, so indirectly desire वापस आने लगती है। Many a times fear होता है, fear factor होता है। So basically जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो लो सेक्सुअल ड्राइव या लिबिडो आ चुका है, उसके प्राइमरीली रीजंस को सॉल्व करने के लिए the survivor or the patient needs to go to a psychologist, you mean first? Yes, no, not see, सबसे पहले तो आप उसको ट्रीट कीजिए, आप जाके दिखवाइए कि is there some shortening, is there some effect of menopause, एज की वजह से नहीं, because of chemotherapy और whatever हो रहा है, जो चीज ट्रीट हो सकती है पहले उसको देखिए। आजकल क्या है ना, जैसे कि आप हमने बात करी, आई कुड नॉट गो टू दैट, द नेक्स्ट स्लाइड, हार्मोन्स की बात करी। हार्मोन्स इज नॉट अ वेरी वायबल सॉल्यूशन। जो हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव है वो ले सकते हैं वजाइनल ईस्ट्रोजेंस,
जो ER-PR नेगेटिव होते हैं, जिनको मेनोपॉज बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी या और रीजन से हो रहा है, उनको उनमें दे कैन टेक वजाइनल एस्ट्रोजेंस, उनमें वो बहुत हेल्पफुल होता है. सेकेंड, वी हैव नाउ अदर वेज ऑफ ट्रीटिंग इट विदाउट हार्मोन्स. आजकल लेजर्स आते हैं, आजकल PRPs आते हैं, आजकल हाइलुरोनिक जो फेस में हम फिलर्स यूज करते हैं, दीज आर नॉट प्रूवन टेक्नोलॉजीज, बट अभी रिसेंट टाइम में दे हैव कम अप अ लॉन्ग वे. जो आप कहते हैं कि अगर आप लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर यूज होती है, उससे जो वहां की वजाइना की जो कोलेजन है और ये सब जो श्रिंक खत्म होने लगती है, वो फिर से ग्रो करने लगती है और वो ब्लड सप्लाई उसकी बढ़ाती है. सो दीज आर सेटिंग्स, इनसे बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं आता है. थर्ड, जिसको बहुत पेन होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है. आजकल जैसे फेस पे लोग बोटॉक्स लगाते हैं, बोटॉक्स नीचे पेनिनियल मसल्स में भी लगाई जाती हैं ताकि आप बहुत ज्यादा मसल अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए. सो देर आर ऑप्शंस विच आर इन प्लेस ऑफ हार्मोन्स. इसको हम वजाइनल रिजुविनेशन सर्जरीज कहते हैं. बहुत सारे आजकल पेशेंट्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, लेबिया, जो लेबियल आपकी होती है वो अट्रॉफी होने लग जाती है, एजिंग के सिम्टम्स आने, उनको और खराब लगने लगता है. दे कैरी अ नेगेटिव एस्टीम अबाउट इट. तो आजकल ना एनर्जी सोर्सेज आती हैं जिनकी सिटिंग्स लगती हैं, धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं. दीज आर एंटी एजिंग, जैसे फेस पे करते हैं ना एंटी एजिंग. So similarly, things have gone down also. Okay. So one question which I thought, when I had spoken to one psychologist earlier, do you think agar lamba foreplay and things like that might help the women to get aroused to an extent? Lamba? Like a longer foreplay might help women to get Definitely. aroused? See, going with non-pharmacological हमेशा first होता है, no drug therapy. उसमें you have to relax in the mind, have communicate with your husband. Somehow जो आपका बीमारी में ना एक communication gap आ जाता है, तो वो please build that communication once again. Speak to your partner. What are your likes? What are your नहीं होते हैं. और हम लोग कहते हैं जो ये सेक्स थेरेपीज होती हैं, these are somehow called एक सेंसेट फोकस थेरेपी भी होती है, जिसमें कि it is not only about genital stimulation, it is non-sexual stimulation also that brings lot of एक्साइटमेंट. तो ये सब चीजें भी सीखनी होनी चाहिए. मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में कहें तो इट कैन मीन फोर प्ले ऑल्सो. सो वी शुड इन फोर प्ले विल ब्रिंग मोर lubrication, more sexual excitement. So the couple goals need to be decided. They have to sit down and talk, and there has to be a very good communication between them. तो कई बार थेरेपी से ना आपस में कम्युनिकेशन भी बढ़ती है. So, and if this does not go away, अगर ये सब से नहीं हो रहा है, so then go for other treatments. वो तो आप वैसे भी lubricants, moisturizers, जो oils वगैरह ये सब तो वैसे भी use कर सकते हैं. It is not कि आप अगर उसमें एक part ले रहे, you cannot go for the other part. But if it does not help and you cannot take vaginal estrogens, you can try what I earlier said, जो platelet rich plasmas देते हैं, PRPs वगैरह होते हैं, hyaluronic acid fillers होते हैं, they might help the regrowth of vagina. Okay. There's another question another question that has come up. This is she's asking that those who have estrogen/progesterone negative tumors, can they use hormonal gel in vagina? Yes, they can. Other question is that Dr. Tripti, who does vaginal laser rejuvenation surgery? We have plenty of such centers. I have also recently started doing it. It is not a very big deal for gynecologists who are doing vaginal surgeries. They are very expensive modalities. बहुत मुझसे exact cost मत पूछिएगा क्योंकि मुझे अपने हॉस्पिटल में जाके पता करना पड़ेगा. But they are expensive. बहुत सस्ते नहीं होते. Per sitting anywhere between, depending on the center, it can be from 5,000 to 10,000 to 15 to 20, right? तो जो 4-5,000 में भी है तो आपकी 5-6 सिटिंग्स लगती हैं, एंड एवरी 4 to मिनिमम 1 महीने का इंटरवल देना पड़ता है. बट देर आर नाउ रिपोर्ट्स कमिंग इन कि इन सब रिजुविनेशन जो चीजों से इफेक्ट पड़ता है, एंड बिकॉज जो हार्मोन पॉजिटिव हैं उनके लिए फिर कोई और ऑप्शन भी तो नहीं बचता है ना ज्यादा. सो फॉर देम इट इज अ इंटरेस्टिंग एंड अ वायबल सॉल्यूशन. Okay. There's another question that has come up. वो कह रहे हैं कि that is it okay
to have sex when you are undergoing the treatment, जब आप chemotherapy पे हो, is it all right? I don't think it should affect chemotherapy. It would rather make you feel more positive. It would induce a sense of well-being. So it is always important कि अगर आप कोई एक इतनी बड़ी disease से fight कर रहे हैं, use all your ammunition that makes you feel good, है ना? तो उसके लिए आप जितना mentally strong रहेंगे, जितना आपका strength रहेगा, and strength comes from happiness, and this always gives you more happiness and more bonding with your partner. So there is nothing wrong in having sex while you are going treatment for your cancer disease. Okay, somebody has sent on my private chat. She's asking, but like, I think I should address this question, but I'll just read it aloud. Okay. She's saying that how is it possible to feel more of a woman during or after the cancer surgery? और क्या मैं woman नहीं feel कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं aroused नहीं हो पा रही हूँ? So, girls, I would like to address this since I'm already 6.5 years. I'll complete my 7 years this October. एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे. हम सब ने 90% of us have always treated sex as something हाँ पार्टनर के साथ करना है. Yes, पार्टनर के साथ करना है. पर जैसे हमें भूख लगती है और हम खुद के लिए भी तो करते हैं. I eat because I'm hungry. Similarly, I think it is important to change that mindset now, at least after breast cancer diagnosis and treatment, कि I need sex to feel happy myself. So I would suggest कि पहले शुरुआत के लिए start with baby steps. Please, जैसे डॉक्टर तृप्ति ने कहा, we will have to engage with the partner. इसका और कोई first step तो ये लेना ही पड़ेगा. Encourage your partner to please explain to him, talk to him that, well, I do not feel like having sex right now, but we both can together take baby steps to make it happen. Again, his lady is not writing on this thing, she's writing on a private chat. Can I comment one thing here? Yes, please, अगर क्या होता है जब कैंसर डिजीज होती है, कोई भी डिजीज होती है, तो कई बार हमारा जो खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है. समहाउ हम अपने इतना टाइम हो जाता है, गैप हो जाता है, तो हम कई बार कॉन्शियस होते हैं बोलने के लिए. So to regain your confidence, it is always preferable to first do things on your own. Yes. Try doing a self-indulgence, do a little bit of masturbation yourself. You will feel more confident that you still have erectile organs. You can still have arousal, you can still have orgasm. तो उससे मैंने बोला उससे आपकी vaginal blood supply भी बढ़ेगी. And you don't have to depend on your partner for that. तुम सब एक बार सबको फिर से निधि कर दो, then I'll do that. Yeah. Okay. हाँ जी. So just like आप डॉक्टर तृप्ति अपना unmute करो. Yeah, I'll do that. So it is a very important component to do some self-indulgence also, because and once you gain confidence over it, that yes, your organs and everything are perfect, you are capable of having then capable of having arousal, of orgasm, and you overgo the fear of penetration. Okay, with dilators and all. Then the next step comes the partner, and then be very open about it. It has to be open क्योंकि एक दूसरा phase है. Without communication, as you rightly said, nothing will happen. है ना? Yeah. And I have told you, हमारे पास patients ऐसे भी हैं with blind vagina who've never had a vagina, and they've had a very good sex life. मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगी, sorry to interrupt, क्या बहुत सारे क्या इनफैक्ट सभी को ये है issues of body image. I'm sorry, I'm going to sound very harsh यहाँ पे, but remember one thing, girls, अगर अपनी body के लिए you cannot look for validation somewhere else. I agree कि हमें आज तक, yes, a couple is there and you look up to your husband, your partner कि हाँ मैं सुंदर लग रही, we look for validation. But at least after breast cancer treatment, enough. Girls, please do not look for validation. Think it in your own mind. मैं आज भी खूबसूरत हूँ, मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं सुंदर हूँ, मैं alive हूँ इसलिए I'm attractive. जब तक ये बेसिस हम ठीक नहीं करेंगे, हम चाहे जितने मर्जी गायनेकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जा पाए,
the first step will have to be taken by us. Am I right, Dr. Tripti? या डेफिनेटली। और अगर कोई भी एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है तो अपने साइकोलॉजिस्ट को प्लीज ये बताइए, साइकेट्रिस्ट को, कि मुझे लो लिबिडो और देयर आर मेनी एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स जिनकी वजह से होती है, तो वो चेंज करके दूसरा होता है। क्या होता है, हम हर चीज ब्लेम करते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ कैंसर, या हमारा ब्रेस्ट कैंसर मे नॉट बी बिकॉज ऑफ दैट। सो इसीलिए इस चीज को भी ध्यान रखिए कि और जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं हम उनको कहीं इग्नोर ना करें। ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, meditate well. These things give you a, you know, more, they infuse more positivity. आप जितना पॉजिटिव फील करेंगे, जो डिजीज है वो निकल गया, यू आर वॉरियर्स। आप इस स्टेज पे आए हो जब बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, सो दिस इज समथिंग टू बूस्ट यू अप। And you, most of us have children and everyone looking up us to us, so we have to be happy for them and let's, you know, have, it's easier said than done, but आपसे ज्यादा कौन ये चीज बता सकता है हमें? I mean, आप लोग मुझे ये चीज टीच कर सकते हो, the importance of being positive. Dr. Tripti, one little question I have personally for since so many years. I believe in it, so please correct me if I'm wrong. मुझे लगता है कि बहुत हद तक women as compared to men we are different. Why different? Not only physically, but we are different in our mind. I think a lot of us women first have orgasm in our mind and then in our bodies. ये Yes. मेरा मानना है। मैं पर्सनली इसको इवन नहीं, मैं बिफोर ये माय चीज कैंसर आपकी ट्रीटमेंट मानती हूँ, फीमेल्स के लिए इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन आर मोर फिजिकली अराउज्ड, दे आर मोर फिजिकल दैट वे, women have more emotional, they are, मैंने आपको बोला ना, डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। there are so many women who have never had an arousal orgasm and they're very happy. It doesn't matter to them because they're happier being, I mean, you don't have sex only to have an arousal or an orgasm. Sometimes you do that just to feel close. Yes. It gives you a very good, you know, feeling. So, I mean, sex has a lot of components. It's not only the mere physical act of having sex. It gives you a very good feel also, है ना? Even if without lot of components. There's someone again who's writing at the iPhone 6, I don't know, something. She's saying, Hidhi, how can we improve our sexual capacity in our mind? Well, सबके लिए अलग होती है, but if you're asking me this specific question, I would say the first thing I would suggest is, though I'm not a doctor or a psychologist, that first, even if you're planning to have a sexual, you know, thing like make out, पहले अपने आप को खुश करो. You might wear a good dress. First, look at yourself in the mirror and tell yourself, I'm very beautiful. I need this sexual thing to make myself happy. मुझे खुश होना है. First step, then go step by step. जैसे डॉक्टर तृप्ति ने कहा कि we use dilators or fondling or longer foreplay. Identify, you will get those answers from within. If you don't want to go to the second step of, you know, like the surgery and things like that. Am I right? Can you add to it, Dr. Tripti? No, you're perfectly right there. It has to come from within. जब तक आप खुद motivated नहीं होंगे, and don't strain yourself. अगर अभी कैंसर डायग्नोज हुआ है, give yourself some time. 5 महीना, 6 महीना, साल भर, you know, it takes lot of time to come back to. There is no shortcut. Once we accept that there's a disease, it cannot be हम आँख बंद कर लेंगे तो वो चली नहीं जाएगी. It will be there. So give it some time. You will come back to your original self. थोड़ा सा patience, थोड़ी सी positivity रखिए. You are the same person who was there earlier. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है. बाकी जो मेडिकल चीजें उसको ट्रीट करने के देयर आर डेली वेज. मेडिकल साइंस इज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग. 4 साल पहले नोबडी न्यू अबाउट लेजर्स, पीआरपी, किसी को भी नहीं पता था. ये सब नई नई चीजें आ रही है. होपफुली मोर पीपल विल अंडरगो इट, मोर विल टेल अस ये कितनी इफेक्टिव है, कितनी नहीं है. दीज आर न्यू थिंग्स दैट हैव कम अप. सो आई एम श्योर कि हर किसी को हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए. बट सबसे पहले, जैसा निधि ने कहा, हमको खुद को हेल्प करना है. We have to somehow have lot of courage, lot of hope and lot of positivity. Do we have any other questions for Dr. Tripti? हम और कुछ पूछना चाहेंगे? Chat box में लिख दीजिए या raise your hand if you want to ask her directly yourself. कुछ और? It looks like we don't have Pooja Stuti,
Preeti, any मेरे of you ख्याल से anybody? हमने एक चीज पे बात नहीं करी निधि, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। बहुत बार प्रॉब्लम चाहे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल को हुई है, मेल पार्टनर को भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मगर डॉक्टर तृप्ति, वो आपकी बात तो ठीक है, बट द थिंग इज यहाँ पे जो हम गैदर हुए हैं, लाइक दिस गैदरिंग ऑफ अस इज प्राइमरली मोर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स एज ऑफ नाउ, यू नो, बिकॉज़ नहीं, I understand, but let me tell you, many a times जो female sexual problem है, they arise because of male sexual dysfunction. हस्बैंड ने foreplay नहीं करना, हस्बैंड को proper erection नहीं हो रहे, हस्बैंड को proper ये सब नहीं हो रहे, तो he will hurry, आपको ज्यादा पेन होगा। So please see that अगर आपके हस्बैंड या पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है, that also needs to be solved, which is what I mean. oh yeah, that was one wonderful, Dr. Tripti. We missed that important part. Yes. Many a times it is not the female who is responsible. कहना बहुत आसान होता है कि उसको बहुत पेन होता है, उसको डिजायर नहीं हो रही, उसको ये नहीं, it is the problem is coming from the husband. Maybe he is also traumatized by the fact that his wife is having breast cancer. I mean, this is what I meant. Yeah, very well said, very है ना? pertinent So point. Yeah, we बहुत need, it's a जरूरी. couple problem. We need to look after the husband also. अगर if you feel कि husband को problem है, husbands, as we were discussing earlier, they are not very forthcoming. But trust me, 40-45 के बाद husbands को vascular problems, heart problems ये सब होने लगती है, erection problems होती है, erectile problems होती है. Half the time वो they will shy away, they will say they will not have, कहने की बात, और they will not accept these things. But as they grow older, they have problems there. And because of that, frequency goes down. The frequency goes down, so और issues होती हैं. It happens with those who are not cancer also. उनके Yeah, husbands में भी होती हैं. So this very well please said. remember these factors. कि as we grow older, husbands भी old हो रहे होते हैं, उनको ये सारी problems होती हैं. Shimona, you can ask your question. Shimona, you can unmute Yeah. yourself. Yeah, thank you. My question is, so depression or feeling very, I don't know, low in self-esteem, just a low mood, बहुत ही vicious circle है. And अगर, you know, for example, I'm trying meditation, I try doing some exercise, but it helps, but it's not something जो मेरा mood इतना uplift करे that I feel good about myself. Are there OTC or antidepressants, or if not antidepressants, just mood uplifters available that I can use for a while? So, you know, it just gives me that push and then I feel better about myself. That's right. So I didn't understand the question. My question is, are there mood uplifters or, you know, Yeah, antidepressants definitely, available Shimona, why not? over the counter? I don't want to No, meet I another don't doctor. think they are available over the counter. ये सारे जो drugs होती हैं, ये without signatures, without stamp and without prescription of doctor नहीं मिलेंगे. Okay, because I obviously, yeah, I the only outing that I have these days is going to a hospital, meeting a doctor. I'm not ready to meet another doctor. And So maybe you can talk to your doctor. वो doctor ही लिख देगा आपको. If you tell him that you are undergoing these problems, I'm sure they can write something for okay, you. okay, They will understood. definitely write. Usually जो long standing diseases में doctors हमेशा लिखते हैं, और जो ये nutraceuticals होते हैं, जो multivitamins होते हैं ना, ये जैसे vitamin E है, ये सब भी अच्छे mood elevators होते हैं. And as you're rightfully doing, indulge yourself in, you're already, you said that you're doing meditation वगैरह. कुछ अब मुझे नहीं मालूम आपके disease का stage क्या है, whether you can do some walking, running, swimming, dancing, singing. These things elevate mood like anything. Understood. Thank you. Yeah. Though it is very easier said than done, I do understand, Shimona. But please talk to your doctor. I'm sure he'll write some medicine for you. You will feel good. Okay, thank you. Yeah. Pooja, you can ask a question. Yeah, doctor, I personally feel like, you know, jitni bhi problems hain, especially regarding the sexual function, it's got more to do with the mind. Like, you know, it's got less to do with the physical aspect. And secondly, if it is a physical aspect, I'm sure most of the cancer warriors, as we call ourselves, they are scared to take over-the-counter medication just because of the fear that, you know, already we have taken so much, already so many drugs have gone into our body. So, ab isko leke kuch, whether it will have a counter effect or not. So, I think this is again, I mean, the psychological aspect, and the second part is whether it, you know, any kind of thing,
as a cancer warrior, a person, I'm sure, like, you know, the ladies would be scared to take them. Yes, I agree So with you it's there. like, yeah, it's again, it's a fear, and just a need to address कि उसका कुछ असर होता भी है या नहीं होता, और ये safe है, इसको हम ले सकते हैं. So because as you said, like I am triple negative, koi ER/PR positive hai, koi hai. So it's like, you know, different for everybody. So how to address that? I would मेरे say. ख्याल से जो आपने बोला कि अगर आपका फियर है ड्रग्स का, यू कैन गो फॉर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स. ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो साइकोलॉजिकल और वो सब है. यू Yeah, कैन गो it's फॉर like, अदर थिंग्स, जैसे कि आजकल मैंने कहा न्यूअर चीजें आती हैं, म्यूकोजा रीजनरेशन, दे आर नॉट एट ऑल कैंसरस. जो आपका ही ब्लड होता है जिसमें से प्लाज्मा डालते हैं, पीआरपीज हैं, एनर्जी सोर्सेज, यू कैन ट्राई देम, एंड अबव ऑल यूज डायलेटर्स एंड लुब्रिकेंट्स, दे विल हेल्प यू. एंड माइंड का तो फिर वो वही है, यू हैव टू ट्राई टू डू अ पॉजिटिव थिंकिंग. नहीं हो रहा है, डिप्रेशन है, you will have to go to a what I'm psychiatrist. speaking from the point of hum log to you know, maybe we have access to so many you know, dilators or lubricants, over the counter drugs. Itni sari ladies hain who are in small towns, villages, who don't have access to or knowledge about these things. And again, I personally again feel कि men are you know, I think they take the lead in the भगवान ने bedroom. हमें 2 fingers दिए हैं और lubricants and jellies दिए So I हैं. think we need to reach out yeah, there. So, you know, it is not that you always need a dilator. We are sometimes very shy of our own body. हम लोग पेशेंट्स को समझाते हैं कि पुट 2 fingers inside, आइडेंटिफाई योर पेरिनियल मसल्स. वो बहुत जरूरी होता है. आप जब यूरिन पास करने जाते हैं, जस्ट जेंटली पुट 2 finger विद जेली इनसाइड. अपने मसल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा कौन सा मसल है, एंड देन कीप कॉन्ट्रैक्टिंग इट. दैट इज द चीपेस्ट, इजीएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव थिंग, जिसको कीगल एक्सरसाइज कहते हैं. हम लिखते बहुत है लेकिन मैक्सिमम वुमेन नहीं करती हैं. दिस इज जैसे कि हम हाथ के लिए तो वेट्स उठा लेते हैं, दौड़ लेते हैं, पैर हम वजाइना के लिए क्या करते हैं? वी डोंट डू. अब जितनी बार यूरिन जाते हैं, 5 मिनट्स और अपने उस पे बैठ के ये वाला एक्सरसाइज करें, यू विल फील द डिफरेंस. तो ये प्लीज कीजिए, ये बहुत जरूरी है. मतलब डायलेटर्स एंड ऑल बहुत जरूरी नहीं है. बहुत सारी क्रीम्स, बहुत सारी चीजें वैसे भी हैं which is not very expensive, बहुत महंगी नहीं है, समझ नहीं होती है. Yeah, sure. और फीमेल्स को हेसिटेशन बहुत होती है. एक वो कल्चरली इनब्रेड होता है कि हमको यहाँ नहीं टच करना, ये नहीं करना, मैस्टरबेशन इज रॉन्ग, दिस इज राइट. तो ये राइट्स और रॉन्ग से निकल के मेन, दे डोंट थिंक मच अबाउट दीज थिंग्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज वी women, especially our generation, who think so much. So somehow we have to unlearn a few things and learn again. Very well said, Dr. Tripti. The last answer that you gave was fantastic. I think it sums up everything. It's high time we need to look after our own interests first of all. जब तक हम खुद के अंदर झांक के अपना सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, एंड देन सोल्यूशन अगर हमें दिखता है, देन प्लीज बी अपफ्रंट और अपने पार्टनर या स्पाउस को बोलो कि मुझे ये चाहिए है, I need this. If at all, you know, like after helping yourself, भी आपको कुछ लगे, हाँ भाई मुझे और कुछ चाहिए, I need longer foreplay, fondling, whatever it might be. We need to talk it out. Yes. हमको शाइनेस तो छोड़नी ही पड़ेगी. वो हम सबसे पहले फीमेल्स ना खुद में ले लेती कि इट इज बिकॉज ऑफ अस. एज आई टोल्ड यू, 50-60% टाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ द मेन. But by default, we think it is because of age, because of our disease, because of this. So we automatically think that it is because of us. Women, they need lot of foreplay. They need to be emotionally aroused. Then only it will be less painful for them. It's Otherwise, more of if a you think that, psychological thing. you know, you just you पलटे और हो गया, तो फिर उसमें बहुत पेन होगा. At any age, I would say. I guess we are done. There is somebody who's saying that like we need to have a support group separate which talks about the sexual thing also. Yes, we will do it. We will do it. We will address it on a Happiness After Cancer support group. So we need to thank Dr. Tripti for Thank you such so a much. wonderful discussion. Dr. Tripti, I hope really. I have been able to help you out. I mean, Yes, either I'm of you, sure. anytime, please reach out to me. You can message me. We never talk about our patients. Trust me, हम कभी भी जाके
पेशेंट्स के बारे में अगर हम बोलते भी तो हम ये बोलते हैं ये पेशेंट था. We never ever reveal the identity of the patient. So be very, very assured. In my hospital, we have not lot of other ways. So once we start this treatment, then only we can, हमको समझ में आएगा कितना फ्रूटफुल है जो भी हम इंटरवेंशंस की बात करते हैं. तो प्लीज कम एंड मीट मी व्हेनेवर यू वांट टू, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो. But first, have the courage to come out of it. And I'm sure you all are very courageous women. Admit that this is, accept that this is a need that you have to have. So then we can go forward. और उसमें थोड़ा सा committed रहना पड़ेगा. Even आप याद करो when you had a delivery. Post delivery again it is a condition जब estrogens बहुत कम हो जाते हैं. आपको बहुत टाइम तक contact नहीं होता. So then again you have pain and all these problems. There is lack of desire. उस टाइम पे भी बच्चा छोटा होता है, you get distracted, isn't it? हम उससे निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? If you go back and remember, post delivery भी ये सारी problems होती हैं. हार्मोनल इश्यूज होते हैं, माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है, नींद नहीं आ रही होती है, इरिटेबिलिटी होती है, बट वी कम आउट ऑफ इट. सो उस टाइम हमको कॉन्फिडेंस होता है कि हमको डिजीज नहीं, हमारी उम्र कम है. अब एज वी ग्रो ओल्डर वी स्टार्ट समहाउ कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमको ये बीमारी होगी. तो इट इज नॉट लाइक दैट. अब्रॉड पीपल गेट मैरिड एट 55-60. Yes. है ना? सो लेट्स कीप द zeal of being alive within us. Well said, Dr. Tripti. So thank you for a wonderful session and giving us so much time. We could see Thank you your so much. phones My calling. pleasure. Yeah. We look forward to seeing you Yeah. again on this platform. Yeah. Sure. Thank you so much, Nidhi, and thank you everyone for making me a part of your journey. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Can I leave now? Yes, Dr. Bye. Yeah. Bye-bye.